Hello everyone, welcome to True Education. I'm Surbhi and today we are going to share a journey of Easy Thaya, who is stepping into international education with confidence and courage. She even earned a scholarship of £13,000, landed a job before even flying to the UK and ready to chase her global dreams. In today's video, we are going to share an inspiring journey and how True Education helped her to get there. So we have Easy with us. Hi Easy, how are you? I'm good. So सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि what inspired you to study in UK? So I considered three things basically before selecting a country. Like सबसे पहले तो global reputation. Like everybody knows UK is known for that. Like वहाँ पे there are universities like Oxford and Cambridge and Russell Crooks. काफी अच्छी universities हैं वहाँ की. If we talk about the rankings or anything, है ना. And secondly, the culture. Environment, like they're very welcoming for international students, and lastly of course the living expenses and everything, like the overall expenses. So for me these three like things were really important before selecting a country. For anybody it can be different, but just filter out things accordingly. Next question is, how did you hear about True Education? So one of my friend recommended me, who have already been to UK through the help of Troy. Can you tell me the name of your university and course? The university I have enrolled in is Lancaster University, and I'm pursuing MSc in International Business and Strategy. So Easy, if we talk about the process, तो उसमें कितने दिन लगते हैं? So Troy processed the application for me and it took almost a week. मुझे उसका offer आ गया था university के end से, and then like after that like fee deposit करना होता है, which was £2,000 for my university, so I can confirm my seat in that. And after few weeks you also get your CAS, which is a confirmation letter कि एक unique reference number होता है university की तरफ से, which after that only you can apply your visa actually. Great, that's interesting to know. So did you receive any scholarship from this university? So I actually received 2 scholarships from the university in itself. It was the total amount of £13,300. So one was for international applicants if they have good grades. So they have a criteria basically, and if one lies into that, so they will get automatically £5,000 scholarship in that. And the other one is from management school, so that was basically in my course which I got into, and that was somewhere around £8,300. So that again depends on your grades. So Easy, the tricky stage. Visa आने में कितना time लगा और visa के process में कितना time लगा आपका? I applied my visa with the help of my counselor. Like it was an online process, and it took approximately an hour with all the starting the application and the end part, which is the payment and everything. So it took around that, and it's an easy process. And like I applied it in a standard category, and I also received that in around 8 working days. So Easy, as you mentioned about the process, so can you please tell us like how much living expense we need to show for studying in UK? So as my university is located outside the London, I had to show approx 11 to 12 lakhs. And if somebody is applying within the London, then they need to show approx 14 to 15 lakhs. So Easy, as you're stepping ahead in your journey, so I know बहुत ज़्यादा difficulties आती हैं, challenges आती हैं. So did you face any challenges? So I think one of the biggest challenges that students face is to convince their family, है ना? तो second एक तो job हो गया, and first family of course, and Troy really helped me a lot to convince them. मतलब उन्होंने पूरा process समझाया, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या difficulties मैं वहाँ जाके face कर सकती हूँ, या फिर like my father had few doubts, तो उन्होंने अच्छे से बताया. मेजर वॉज दी मतलब वेज वाला एक रहता है कि मैं वेज हूँ, एंड वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होती है, हर एक चीज़ मिलती है, तो हाउ वी कैन सॉर्ट दैट एंड एवरीथिंग. लाइक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने क्लियर करी. सो विद ऑल द पेशेंस दे रियली हेल्प मी इन ऑल ऑफ दैट. एंड सेकेंडरी वॉज जॉब, लाइक जॉब वहाँ जाके ढूंढना एंड सारी चीज़ें करना. सो दैट इज़ अ रियली डिफिकल्ट चैलेंज, एंड वो अभी से मेरे पास है. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट. Maybe I was lucky enough that I got that. So how did you book your accommodation? Did you face any challenge while booking the accommodation? At first I was really worried about the accommodation because getting accommodation which is
विच इज सेड लाइक इट्स वेरी कॉस्टली ओवर देयर. तो पहले तो वो फाइंड करना कि आपका बजट क्या है, आप उस बजट के अंदर फाइंड करोगे. एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी होता है एंड आउटसाइड में स्टूडेंट अकोमोडेशंस भी होते हैं, प्लस प्राइवेट अपार्टमेंट्स ऑप्शंस भी होते हैं. तो पहले तो वो रिसर्च करना, खुद से फाइंड आउट करना कि क्या क्या चीज़ें हैं. एंड ट्रूवाई लाइक रिकमेंडेड फ्यू ऑफ द पोर्टल्स, तो वहाँ पे मैंने रजिस्टर किया था. सो आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या क्या हैं वहाँ पे. तो व्हेन आई वाज फाइंडिंग विद इन माय बजट, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं. लाइक देयर आर ऑप्शंस फॉर स्टूडियोज जो कि पूरा प्राइवेट ही होता है. देयर आर ऑप्शंस फॉर एन स्वीट एंड शेयर्ड वाला चीज़ भी एक रहती है वहाँ पे. लाइक आप अगर किसी के साथ वॉशरूम शेयर नहीं करना चाहते हो, देयर आर ऑप्शंस लाइक दैट. बहुत चीपर ऑप्शंस अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको शेयरिंग रहता है. तो वो सारी चीज़ें रहती हैं. विद इन द यूनिवर्सिटी आई वॉज लुकिंग एट फर्स्ट लाइक विद इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था. देन आई लाइक स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड एंड वहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिले. एंड एवरीबडी वो सेइंग कि जल्दी कर लो बुक. तो ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएगा अकोमोडेशन. यू जस्ट हैव टू बी लिटिल पेशेंट विद इट. एंड आप अपना रिसर्च करो, थोड़ा सा देखो, सारी चीज़ें समझो कि क्या क्या कैसे चीज़ें हैं वहाँ पे. एंड यू कैन लाइक स्टार्ट थ्रू दिस ओनली. आप रजिस्टर कर दो हर एक जगह पे, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी. एंड आपको कैसा अपार्टमेंट चाहिए, यू कैन जस्ट फिल्टर आउट थिंग्स. आप स्टार्टिंग से लेके ऐसे कर सकते हो एंड यू विल गेट इट एट द एंड. What's your biggest piece of advice for someone dreaming of studying abroad? Just go for it. I mean, just believe in yourself that you can do it. Never think you can't do it, है ना. And if you have your parents support and अच्छा guidance आपको मिल रहा है, then definitely you can do it ना. So just dream and go. If you are thinking of studying abroad, reach out to Trovoy and let's make it happen.